Hello my dear students and friends, welcome back. It's a new video here for you. Again, it's a new model that is can for you. I have already made two of the videos on may and might, and now this is can. So as you know, the general formula for model is subject plus modal plus V1 plus object. This is the general formula for using any model in a sentence. The first use of model is to show ability. यानी जब कोई एबिलिटी को हम बताना चाहते हैं, जैसे कोई एबिलिटी, कोई क्षमता, कुछ कर सकते हैं हम, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश. You can drive a car. You can drive a car. Some more examples. They can swim. So these are the sentences showing the ability of the subject. यानी सब्जेक्ट की एबिलिटी को बता रहे हैं हम. लाइक आई कैन स्पीक, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. यू कैन ड्राइव अ कार, आप कार चला सकते हो. दे कैन स्विम, वो तैर सकते हैं. And one more thing I want to tell you here, that can is can, maybe, is, am, are able to. Suppose I say I can speak English, or I can say I am able to speak English. I am able to speak English. There is no problem. There is hardly any difference between I am able to speak English or I can speak English. पर क्या है, जब हम बोलते हैं I can speak English, तो ये नेचुरल है, ये कम नेचुरल. इट्स नॉट दैट मच नेचुरल. आई एम एबल टू स्पीक, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये ज़्यादा सही है. ठीक है. नेक्स्ट, अगर हम बात करें सेकेंड रूल, कैन को, टू मेक अ रिक्वेस्ट. एक रिक्वेस्ट हम बना सकते हैं, जैसे and in that request using can, you can use any subject. में हमेशा आई और बी को यूज करते हैं रिक्वेस्ट बनाने में, लेकिन यहाँ हम कोई भी सब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं. कैन आई हेल्प यू, और कैन यू हेल्प मी. तो ये कर सकते हो आप, टू मेक अ रिक्वेस्ट और टू शो एबिलिटी, ये आप बना सकते हैं. ठीक है. अभी चलते हैं अपन एक दूसरे स्ट्रक्चर पर जो
कैन को यूज करके हम बना सकते हैं, लाइक सब्जेक्ट कैन यानी कि मॉडल, इसमें हम बी यूज कर सकते हैं प्लस नाउन या प्रोनाउन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। जैसे बी का यूज हम यहाँ पे करते हैं हो ना, जहाँ पे हमको लगता है कि वर्ब नहीं है। जैसे मैंने कहा ये इस टेबल को थोड़ा लंबा होना चाहिए, या सॉरी चाहिए नहीं, हमें सकता चाहिए। इस टेबल को या हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यह सच नहीं हो सकता, तो अब वर्ब नहीं है, हो सकता, तो बी इट कैन नॉट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी ट्रू। इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। और ले सकते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे I can be a good citizen, मतलब मेरे अंदर कैपेसिटी है एक अच्छा सिटीजन बनने की। आई शुड बी, मुझे बनना भी चाहिए था। आई कैन बी अ गुड सिटीजन। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं कैन को। तो कैन के ये यूज मैंने आपको बताया। तो यू मे प्रैक्टिस using can in a sentence by making sentences. So if you like this video, please like it and share it for others, and keep enjoying learning English through my channel. Subscribe to my channel to watch my new videos, and I have already given my email ID and Skype ID here in that video and below that video. So you may contact me if you think you want to have one-to-one classes with me, or if you are preparing for any interview or for any exam. You just contact me through Skype or my email ID. I'll talk to you and I'll try my best to help you. Thanks for watching that video.